Don't A very energetic and enthusiastic morning, everyone. Welcome to the second day of the most awaited event of the year, ZEAL'22, organized by MAC, the marketing club of Sri Venkateswara College. The first day of ZEAL was jammed with fun, excitement, and energy. It witnessed an array of jaw-dropping competitions such as MAC Tank, Case Roads, Brandomaniac, and Marvelous Macness.
With that, Zeal also hosted numerous renowned personalities from every walk of life, entertaining and providing you with the best of insights into the world of marketing. Oh, if someone missed that fun, तुम्हें FOMO तो होना ही है. But don't worry, we have got you covered as we come back with the same energy and zeal to host the final day of ZEAL'22. Now, to set a motivating tone for this day, we have an immensely galvanizing personality present here with us today. He's a very proud alumni of IIT Guwahati, currently working on blockchains. He runs his own YouTube channel guiding students from all over the world about coding, placements, gate, and etc. I take great pleasure in welcoming Mr. Rohit Negi, our speaker for ZEAL'22. You have the floor, sir. We all are very eager to hear you. Hello. Hello. I'm audible to everyone? Yes, sir. Okay. So everyone of you are from North India or you are from some different states? I just want to know. So we can start the session, I think. So good morning, everyone. First, I will give a brief introduction about me. So hello, everyone. My name is Rohit Negi, and recently I got an international offer from Uber of more than 2 crore plus, and currently I'm pursuing my master's from IIT Guwahati. And basically, I'm from a beautiful place, and the city of God, I can say, is Uttarakhand. So without any delay, I think we can start this session. I will start from my journey. Okay. तो हिंदी में शुरू करते हैं जल्दी जल्दी. Everyone is comfortable with हिंदी or should I continue with English? हिंदी में ज्यादा फील आएगा ना, तब पूछ रहा हूँ. Everyone is from North India. Anything works. Hindi also works for us. Okay. We can continue in Hindi. Okay. One minute. Okay, mix. Okay. So basically, I was born in Uttarakhand, and there is a small place called Kurdwar. तो वहीं मेरा जन्म हुआ था उत्तराखंड में. तो मैं एक गांव के इलाके से हूँ. बेसिकली एक ऐसी कोई सिटी तो थी नहीं, तो गांव के इलाके से थे. वहीं से मैंने अपनी पूरी एक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी. स्कूल में मैं बहुत टैलेंटेड तो बिल्कुल नहीं था. अगर मैं ऐसा कहूँगा कि मैं टैलेंटेड था तो ये झूठ होगा. बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था. जब मैंने शुरू करा था तो मैं मैथमेटिक्स में सही था. और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आज सेमिनार में होंगे, आपका कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है. तभी आप जहां भी अभी आप हैं इतने अच्छे कॉलेजेस में, इसलिए है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी. तो उस वक्त सेम मेरा भी सीन था. मैं मैथ्स में अच्छा था, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट थे मेरे वो बहुत ढीले थे. आई वॉज नॉट गुड इन अदर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई विल से. पर एक चीज थी कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे खुद के ऊपर. तो जब मैं शुरू किया 9th-10th में बहुत एवरेज था. तो 9th में मेरे मैथ्स में ही 30 मार्क्स आए थे. और वो एक लाइफ का एक छोटा सा सेटबैक था मेरे लिए भी कि आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट. क्योंकि आप ऐसा होता है कि जब आप अपने लाइफ का फेज चेंज करते हैं, 8th तक की मैथ्स अलग होती है, 9th-10th में अलग है, 11th में थोड़ी अलग लेवल पे चली जाती है. तो वही मेरे साथ होता. तो मेरे कम मार्क्स आए थे. तो मैंने जब 10th में गया तो 10th में भी सेम वही हुआ. सीबीएसई बोर्ड से हूँ मैं भी. तो सीबीएसई बोर्ड में मेरा सीजीपीए जो था वो 7.6 था. 7.6 जो कि एक बहुत ही कम सीजीपीए होता है अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो. तो मैं 2013 का पास आउट हूँ, 10th क्लास 10th. मैथ्स ठीक थी, एवरेज थी. मैंने 9 सीजीपीए था मेरा मैथ्स में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में काफी कम था. तो उसके बाद मेरे थोड़े अच्छे दोस्त बने थोड़े कॉलेज में. जब मैं 11th में गया, जो क्लास के टॉपर होते हैं वो मेरे फ्रेंड्स बने. जब वो फ्रेंड्स बने तो मुझे खुद के अंदर फिर से चेंजेस दिखे. हाँ, कुछ तो अलग है थोड़ा बहुत. ठीक है कि जब आपके सर्कल में कुछ अच्छे लोग होते हैं, आपने भी कई बार एनालाइज किया हुआ इन चीजों को कि अगर आपके लाइफ में और आपके जहां पे भी आप हैं, अगर आपके अगल बगल के लोग थोड़े अच्छे हैं तो उनका असर आपके ऊपर दिखता है.
मतलब अभी आप कॉलेज में भी हैं, मतलब जिस टाइप के दोस्त अगर अभी आपके बन रहे हैं, अगर मस्ती वाले दोस्त हैं अगर आपके, तो आप मैक्सिमम आप सब मस्ती वाली फेज में चले जाते हैं। ठीक, अगर आप जिम वाले दोस्त बने तो आप जिम वाले फेज में चले जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ होता, मैं 11th-12th में था, तो मेरे थोड़े पढ़ाई वाले क्लास के टॉपर वो मेरे फ्रेंड्स बन गए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे थोड़ी हेल्प मिली, और 12th में मैंने थोड़ा इंप्रूव किया। तो 12th में मेरी जो परसेंटेज थी वो थी 82.4%। अगर आप 7.6 से कंपेयर करोगे तो रिलेटिवली इट वाज हायर देन दैट। मैक्सिमम थिंग व्हिच आई हैव सीन विद स्टूडेंट्स, हमारे 10th में तो अच्छे होते हैं, लेकिन 12th में आके थोड़ा मैथ्स मार्क्स में ड्रॉप हो जाता है। या अगर आपने एक जनरल पैटर्न अगर देखा हो तो वो सेम चीज मेरे साथ भी था। तो क्लास में 12th पास आउट कर चुका था, तो मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर आप में से कोई उत्तराखंड में से है तो यू विल नो दैट कि देयर आर ओनली 2 स्कोप इन उत्तराखंड, आइदर वी गो इन आर्मी और वी मूव टुवर्ड्स द होटल मैनेजमेंट। मतलब बहुत बड़े सपने नहीं दिखाए जाते हमें वहाँ। अब मैं था भी गाँव क्लास से, तो वहाँ यही चीजों का बहुत ज्यादा क्रेज था कि बच्चे सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं आर्मी के लिए। तो इस टाइप का पूरा सीन रहता था। तो मैं था तो बहुत पतला सा, बहुत ही पतला था। ठीक, आर्मी वाला तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया था कि हाँ आर्मी में तो जा ही नहीं सकते। और एचएम करने का मेरा मन था, अगर मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं, पर मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था कि एचएम नहीं करना है। ठीक, तो उसके बाद मैंने 12th पास के बाद फिर आईआईटी का सपना था, आईआईटी का सपना दिखाया। आप में से भी बहुतों ने आईआईटी का सपना देखा होगा। ठीक, तो वही सेम मेरे साथ हुआ। तो आईआईटी के सपने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो घर से 100-200 किलोमीटर एक लोकेशन है देहरादून, आप सभी ने शायद नाम सुना होगा। तो वो मैं वहाँ कोचिंग के लिए गया। तो 2 दिन मैंने तो अच्छे से पढ़ाई करी। वही जब इनिशियल फेज होता है आदमी को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है कि हाँ पढ़ना है, घर से बाहर आया हूं, कुछ तो कुछ करना है। तो 2 दिन मैंने तो जम के पढ़ाई करी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पूरा पैटर्न ही बिगड़ गया। फिर वही दोस्त, मस्ती वाले दोस्त, मूवी वाले, इस टाइप के फ्रेंड्स। आपने देखा होगा हॉस्टल में ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं। मतलब डिस्ट्रैक्ट होना ना बहुत ईजी है हॉस्टल में। ठीक है, खुद को मोटिवेट रखना अपने गोल के लिए मतलब वन ऑफ द टफेस्ट टास्क आई विल से। तो वही हुआ कि मैं ये नहीं कहूंगा मैं अपने दोस्त को ब्लेम करूंगा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो अर्ज थी कि मैं मैं बिगड़ना चाह रहा था। मतलब इस तरीके से मैं अगर मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो मैं भी उसी लाइन में चले गया। मूवी वगैरह देखते थे, घूमते थे, फिरते थे, वही। फिर अगर आप इतना मस्ती करोगे तो कुछ नहीं होने का। फिर अप्रैल का टाइम आया, जे मेंस दिया। और हाँ एक चीज और, मैं जिस कोचिंग में था मैं वहाँ टॉप 10 में आता था। तो वहाँ टॉप 10 में आने का मतलब कि कुएं के अंदर मेढक, मतलब कैसे बढ़ा हुआ है, मतलब कंपटीशन ही नहीं था कुछ और कोचिंग के अंदर। मुझे लगता था कि यही कंपटीशन है असली। तब उस वहां से बाहर निकले तो देखा कि यार रैंक थी 67,000। ठीक है, मोबाइल नंबर वाली रैंक, जे एडवांस क्लियर नहीं। ठीक, फिर धक्का सा लग गया था कि हाँ ये हुआ क्या मेरे साथ। ठीक, अब पढ़ा तो था नहीं तो इसलिए ज्यादा बुरा भी लगना नहीं था। अगर पढ़ा होता ऑनेस्टली तो खुद को भी बुरा लगता है। जब नहीं पढ़ा होता तो लगता है कि हाँ चलो इतना भी आगे तो बहुत है, चलो अपने दोस्तों से तो ज्यादा ही है जो मेरे साथ थे। ये तो होता ही है, सबको लगता है कि हाँ अपने दोस्तों से बेटर है तो बहुत है, पर वो रियल लाइफ में वो बहुत नहीं है। तो एक फिर मैं जिम, उसके बाद मैं घर आ गया था। तो जब मैं घर आया तो एक दिन क्या हुआ कि किसी एक रिलेटिव का कॉल आया था। आप इन चीजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए कि आपके पेरेंट्स कैसे आपकी गलतियां छुपाते हैं। ठीक, मतलब आपको डिफेंड करते हैं, हमारे सामने हमारी बेइज्जती करेंगे, गलत मतलब बहुत गलत गलत बोलेंगे पेरेंट्स कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते हो दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो। ये सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे भी बोलते थे। तो एक रिलेटिव का कॉल आया था, तो मम्मी दूसरे रूम पे थी, मैं दूसरे रूम पे था और मम्मी बात कर रही थी। तो मम्मी ने कहा रिलेटिव को कि वो उस दिन बीमार था इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आज मुझे इतना बुरा लग रहा था दूसरे रूम में बैठ के, क्योंकि अगर मम्मी छुप के बोलती तो मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं वो सुन रहा था वो सब चीज। और जब आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए झूठ बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव से आपको डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है कि यार मैंने एक तो अपने पेरेंट्स को 2 लाख रुपए डुबा दिए कोचिंग में, हॉस्टल वोस्टल सब मिला के, अब वो मुझे डिफेंड भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। अब था काउंसलिंग का टाइम। काउंसलिंग में मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। तो मैंने सोच लिया था मैंने सिविल इंजीनियरिंग लेनी है। ठीक, मैंने कहा सरकारी सरकारी जॉब उठाएंगे, बस पैसा छापेंगे, वहां बहुत सही लाइफ होगी। देखो क्योंकि मेरे जो दोस्त के फ्रेंड्स थे वो भी उसी लाइन में थे, वो काफी पैसा छापते थे। ठीक, अब पता ही है गवर्नमेंट जॉब में कैसे कैसे लोग पैसा बनाते हैं, तो वही मोटिवेशन था सबको। फिर भैया ने कहा कि
सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेनी है, कंप्यूटर साइंस लो, वहां स्कोप है। आप में से भी कई बच्चों ने 11th में कंप्यूटर साइंस नहीं ली होगी, CS, मैं भी उनमें से था। मैंने फिजिकल एजुकेशन ले ली थी, हल्के में निकल लो। तो सेम मेरे साथ हुआ, तो कंप्यूटर साइंस ले ली, एक एवरेज कॉलेज मिल गया वही उत्तराखंड में, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज गुड़गाड़ी, पहाड़ों में है कॉलेज बिल्कुल। कोडिंग कभी देखी नहीं थी, कभी नहीं देखी थी, ठीक। जब आदमी पहली बार कोडिंग से इंट्रोड्यूस होता है तो देखता है ये हैश इंक्लूड studio.h है क्या, ये है तो है क्यों, पहला आदमी ये पूछता है ये ऐसी लैंग्वेज किसने लिखी है, क्यों लिखी। तो सेम डाउट मुझे भी था। फिर फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया। फर्स्ट ईयर में क्या करता आदमी, कॉलेज आता है, घूमता है, फिरता है, लोगों से मिलता है, इसी में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने सिर्फ जिम किया, मस्ती करी कॉलेज में, बाकी कुछ नहीं किया। मेरा सीजीपीए भी, मेरा जो परसेंटेज थी वो 70 से भी कम थी, 63, 64, 65% ही आ रही थी। क्लास में भी अगर रैंक बताऊं तो 70 बच्चे होते तो 45-50 की उसमें रैंक आती थी। थर्ड ईयर तक की ये कहानी है। फिर जब थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता तो आप में से भी, जब अगर कोई बच्चा होगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बच्चा थोड़ा सीरियस हो जाता है कि अब हो चुका है, मस्ती का टाइम हो चुका, ओवर, अब कुछ करना भी है जिंदगी में, क्योंकि बेरोजगार तो घर जा नहीं सकते। अगर बेरोजगार कर गए तो मम्मी पापा तो पहले मारेंगे, सुनाएंगे अलग। तो वही वो वहां से मेरा मोटिवेशन शुरू हुआ कि पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर में आया, कुछ नहीं था, मैंने टीसीएस का एग्जाम दिया था, ये वाली स्टोरी सुनना आप सब। टीसीएस का एग्जाम दिया था मैंने। टीसीएस का एग्जाम आपको याद होगा कि उसमें आप अगर आप थर्ड ईयर में हो तो उसके बाद एक एग्जाम होता है टीसीएस का, तो हमको घर बैठ के कोई एग्जाम देना पड़ता है, 4 घंटे का होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं कोडिंग के। मैं बैठा हुआ था, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, टीसीएस का एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, 6 में से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ 4 घंटे में। पूरी चीटिंग मारी, सब कुछ रिसोर्स यूज कर ली, एक क्वेश्चन नहीं हिला नहीं, जबकि वो बेसिक क्वेश्चन होते बिल्कुल। फिर मैं वो राउंड क्लियर हुआ नहीं, फिर एक और एग्जाम होता है टीसीएस का, टीसीएस एनक्यूटी करके, वो देने गया दिल्ली में होता है, बिल्कुल मेला लगता है बच्चों का, जहाँ पे टीसीएस के उस बाहर बहुत बच्चों की लाइन लगी रहती है, बच्चे आते हैं एग्जाम देते हैं, आपको लगता है यार मतलब जैसे मजदूरी टाइप का फील होता है। मैं किसी को डाउन नहीं करना चाहता, पर वैसा फील आता वहां पे, मुझे वो खुद आ गया था। मैं एग्जाम में गया, मेरी मैथ्स अच्छी थी तो एप्टी तो मैंने फटाफट खत्म करा, जल्दी जल्दी कोड करना शुरू करा, हुआ ही नहीं, क्वेश्चन हुआ ही नहीं मुझसे, ठीक है। वहां जाके मुझे पहली बार पता चला कि कमांड लाइन इनपुट भी नाम की कोई चीज होती है। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, प्राइम नंबर का क्वेश्चन था, कोई ऐसा बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, प्राइम नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन कमांड लाइन से इनपुट लेना था, वो मुझे आता ही नहीं था, खत्म, ठीक। और क्या हुआ, टीसीएस ने मुझे क्वालिफाई कर दिया इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ये क्या हो गया, ठीक। इंटरव्यू था मेरा सितंबर में शेड्यूल था, अगस्त का टाइम था। वहां से मुझे पता तो चल गया था कि 3-3.5 लाख रुपए की नौकरी लेके तो कुछ फायदा नहीं होना। अगर आप एक थोड़ा लॉजिकल भी सोचोगे तो आपके हाथ में 20,000 रुपए आएंगे, बैंगलोर जैसी सिटी या फिर नोएडा या फिर हैदराबाद, जहां भी आपकी लोकेशन होगी, वहां सर्वाइव करना 20,000 में बहुत ही मुश्किल है, ये फैक्ट है, कोई कुछ भी बोले। तो उसका मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था विकास कुमार, वो बिहार का था, ठीक। वो कर रहा था गिर की तैयारी, तो पढ़ रहा था कब से। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई बताओ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये सिलेबस है, ठीक। तो मैंने उसने रविंद्र बाबू रबुल्ला सर का कोर्स खरीदा हुआ था, तो मैंने उसके कोर्स से पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक। उसकी आईडी दी मैंने और मैं उसको पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने सोच लिया था कि इसको तो निकालना है, ठीक। उसके बाद मैंने 6 महीने मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ पढ़ा मैंने। ऐसे नहीं कि 12-12, 15-15 घंटे, ये भी नहीं है, 5 से 6 घंटे मैंने डेली पढ़ा। और मेरा जो डेली का रूटीन होता था, तो मैं सोचता कि मिनिमम 4 आवर तो पढ़ना ही है, किसी भी कीमत में, कुछ भी हो जाए 4 घंटे मुझे देने ही है। चाहे किसी का बर्थडे, दिवाली थी, मैं दिवाली पे घर नहीं गया, हॉस्टल में रुका रहा, सारे बच्चे नहीं थे, 5-6 बच्चे टोटल हॉस्टल में रुके थे, मैं उनमें से था। क्रिसमस वगैरह सब वहीं कॉलेज में ही रहा, पढ़ना शुरू करा अच्छे से, नोट्स खुद के बनाए, ठीक। एक टेस्ट सीरीज ली थी मैंने। अब ये नहीं कहूंगा गेट के लिए मैंने बहुत सारा चीजें कवर करी, बुक मैंने एक नहीं उठाई, मैंने लेक्चर, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर, बस यही किया, क्योंकि मुझे पता था ये चीजें मेरे लिए काम कर जाएंगी। और गेट के लिए इतना बहुत है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा गेट इतने में हो जाता है अच्छे से। तो ऐसे मैंने जर्नी शुरू करी, तो मैं पढ़ता था, शाम को मैंने 200 रिवाइज करा देता, जिससे मैंने लेक्चर लिया था। वो थोड़ा वीक भी था, मैं तो था ही वीक, वो मुझसे भी वीक था, ठीक।
फिर मैं उसको जब एक्सप्लेन करता था तो मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गए थे चीजों को, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि जब आपसे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं तो आपसे कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। तो जनवरी का टाइम आ चुका था, टेस्ट सीरीज देना शुरू करा, फिर टेस्ट सीरीज में वही हाल 45, 50, 55 मार्क्स 100 में से आने लगे, फिर से कॉन्फिडेंस डाउन। तो थोड़ा माइंडसेट को वापस बनाना पड़ता है कि चलो मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, ठीक। तो फाइनली आता है गेट का एग्जाम का दिन, मैं जाता हूँ एग्जाम सेंटर में, एग्जाम देता हूँ, मस्त लैब कंप्यूटर रहता है, उसमें क्लिक क्लिक करके ऑप्शन बनने होते हैं, ठीक है। जे एडवांस की तरह नहीं होता कि वो फिल करवा रहे हैं तुम्हें गोले गोले हाथ पेन से, ठीक है। मैं वहां गया तो आराम से पेपर दिया, बाहर आया, मुझे लग चुका था मैं गया, कुछ नहीं होना, जैसा जे एडवांस गया ये भी गया। ज्यादा दुख इसलिए हो रहा था कि मैंने इसके लिए मेहनत भी करी थी 5-6 महीने। तो जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट से पहले मैंने आंसर की मैं मैथ कर लेता तो मुझे लगे थे कि हाँ अच्छी रैंक आने वाली है, 100-500 रैंक आने वाली है मेरी, इतना तो आ जाएगा। तो जब रिजल्ट आया तो AR 202 था, बहुत खुशी हुई थी, मतलब पहली बार लाइफ में कुछ अचीव किया था मैंने लिटरली, उससे पहले कुछ भी अचीव नहीं किया था, 0 अचीवमेंट है। वहां से मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ कि हाँ अगर मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा तुमको। तो वही मैं आपको भी कन्वे करूंगा, अगर कुछ ना कुछ करोगे जिंदगी में, मतलब मेहनत वगैरह, तो रिजल्ट पक्का मिलेगा, ठीक है। खुद से ऑनेस्ट रहना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, ठीक। अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं है, ठीक, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर आप में से आपने देखा होगा कि यार आप में से बहुत अच्छे कोडिंग कॉन्टेस्ट देते होंगे, ठीक। अगर उसमें कोई बच्चा चीटिंग मारता है, सच बताओ वो चीट किसके साथ कर रहा है, वो अच्छी रैंक आ गई उसकी, समाज को दिखा दिया उसने, सोसाइटी को दिखा रहा है कि हाँ मेरी अच्छी रैंक आ गई, क्या वो खुद के साथ ऑनेस्ट है? बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या वो किसी कंपनी में सिलेक्ट हो सकता है? एट द एंड ये मैटर करता है कि आप रिजल्ट दिखाएं किसी को, एट द एंड ये होगी आपके हाथ में कौन सी कंपनी है, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी किस उसमें क्या रैंक थी, क्या रैंक थी, मैंने कोर्स का वो इवेंट दिया था, वो कॉन्टेस्ट दिया था, कोई कुछ मैटर नहीं करता। एट द एंड ये हर कोई आपको जज करेगा रिजल्ट की बेसिस पे, ये आपने देखा होगा, क्योंकि हमें से आधे से ज्यादा लोग जो यहाँ पे हैं जेईई मेंस एडवांस में, हमें पता है कि हमारे साथ हुआ क्या है लिटरली, ठीक। मैं यहाँ भी देखता हूँ IIT गुवाहाटी में बच्चों को देखता हूँ, ठीक। तो जो जेईई एडवांस के ना AR 500 के अंडर होते हैं, आज ये बात ध्यान से सुनना, AR 500 के अंदर जो बच्चे होते हैं ये तो है ही टैलेंटेड, ये तो गॉड गिफ्टेड लोग हैं, ये मैंने यहाँ आके देखा, मैंने ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड है ये। अगर ये मतलब ऐसे ऐसे बच्चे देखे ना मैंने कि फैकल्टी पढ़ा रहा है और फैकल्टी को गलत प्रूव कर देते क्लास में, उसी टाइम उस कॉन्सेप्ट को बढ़ गया, मतलब जिस फैकल्टी को इतना एक्सपीरियंस है। तो इन 500 से हमने कम्पीट करना ही नहीं है। बाकी जो उसके बाद के लोग होते हैं सब मेहनती होते हैं कि कितनी मेहनत कितने आवर्स अपने देते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। जे एडवांस का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ मेरी 202 रैंक आ चुकी थी, तो उसके बाद कोविड का टाइम आ गया था, उस टाइम पे कोरोना आ गया था, तो सब घर पे बैठ गए थे। तो उस टाइम में मैंने नॉवल वोल पढ़ना शुरू करा, थोड़ा अपनी थिंकिंग को थोड़ा अच्छा करना शुरू करा। तो मैं थोड़ा उसके बाद मैंने काउंसलिंग भरी, तो मैं थोड़ा IIT कानपुर के लिए काफी वो हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे मिल ही जाएगा। उसके चक्कर में मैंने IIT खड़गपुर भरा ही नहीं, ठीक, जो मुझे आसानी से मिल सकता था मैंने भरा ही नहीं, और IIT गुवाहाटी मैंने मजे मजे में भर दिया था। मैं यहाँ आने का मतलब मेरा कुछ सीन ही नहीं था, मुझे लगा था मैं IIT कानपुर ही जाऊंगा। जब आप लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो लाइफ दिखाती है आपको कि आपकी असली औकात क्या है, ये होता है। तो उस साल जब रिजल्ट आने वाला था तो IIT कानपुर ने अपना क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया, जिस क्राइटेरिया में मैं फुलफिल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी बीटेक में परसेंटेज थी कम। तो IIT कानपुर गया हाथ से, तो मुझे IIT गुवाहाटी मिला। पहले तो मुझे हुआ गलत दुख कि मुझे ये कॉलेज मिला, ठीक, क्योंकि मुझे रैंक के हिसाब से मुझे IIT कानपुर में डिजर्व करता था। तो फिर यहाँ आया तो चलो फिर क्या ही कर सकते हो, जब एक बार वो चीजें हो चुकी हैं उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो यहीं से बेस्ट निकालेंगे, जो भी है यहीं से करेंगे। जब शुरू हुआ फिर से चीजें, अब मैं कॉलेज में आया तो मैंने कभी कोडिंग करी थी नहीं, लिटरली कभी करी थी। मैं आपको पहले बता चुका, मैंने बीटेक में 3 साल मस्ती मारी, फिर अगले 6 महीने मैंने गेट पढ़ा, उसके बाद यहाँ आ गया था। अब मेरी क्लास में थे कोडर तगड़े, अब उनको टाइम था मेरे पास 1 से 1.5 साल का, और बीटेक वालों से भी कंपटीशन करना था, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छी कंपनी निकालनी है तो आपको कम्पीट तो करना ही पड़ेगा, ऐसी हवा में कुछ नहीं निकलेगा। तो आप में से तो मैंने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पकड़ा, गिग्स फॉर गिग्स, मैंने क्वेश्चन लगाने शुरू करे। अब मुझे पता था कि यार जब भी कुछ चीज शुरू करो ना उसे खत्म पक्का करना है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूसरे लोगों की स्ट्रेटेजी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप गलत है, सबसे बड़ी गलती आप लाइफ में यही कर रहे हैं।
अगर आप ये देख रहे हैं कि यार मेरा दोस्त ये कर रहा है, मैं ये कर लेता हूँ, हमारे साथ बहुत होता है ये चीजें बहुत कॉमन है कि यार मेरा दोस्त ये वाला कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या फिर इस वाले प्लेटफॉर्म में कोडिंग कर रहा है, चलो मैं भी यही कर लेता हूँ, ये नहीं करना। तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स से शुरू करा। हार्डली अकेला मैं ही था जो गीक्स फॉर गीक्स से करता था, बाकी बच्चे लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड सैफ, इन प्लेटफॉर्म में करते थे। मैंने गीक्स फॉर गीक्स से शुरू करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत वो था, ठीक, क्योंकि मेरा लेवल ही गीक्स फॉर गीक्स वाला था। गीक्स फॉर गीक्स का लेवल थोड़ा कम है, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक। अगर आप और कोडिंग प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन करते हो, गीक्स फॉर गीक्स का लेवल है, ठीक। तो मैंने शुरू करा, तो मैंने शुरू करते करते मैंने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 600 कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट किया, आईटी वाईटी पे रैंक 1 था गीक्स फॉर गीक्स में, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद मैंने बोला अब है लेवल बढ़ाने का टाइम। गया इंटरव्यू लगाया, पूरा खत्म करा, इंटरव्यू में मस्त रैंक आई। फिर मैंने लीड कोड पकड़ा। लीड कोड में मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करे, लीड कोड में मैंने सिर्फ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करे, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट मेरा बहुत ही ढीला था। तो मैंने उस बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग खत्म किया, सब चीज हो चुकी थी। अब मैंने सोचा अब थोड़ा और लेवल बढ़ाना है, तो मैंने उसके बाद निकाला कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो असली में पूछे गए हैं आईआईटीज में। तो हमारे पास एक सीट थी, उसमें आईआईटी में कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस में किस कंपनी क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो मैंने वो लगाने शुरू करे। उनका लेवल बहुत ही अलग था, लीड कोड से भी ऊपर था काफी। तो वो क्वेश्चन करे मैंने, गूगल के करे, बहुत कंपनीज के करे, तो वहां से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू करा। जब आप आईआईटी में आते हो तो आपको 50 कंपनी में बैठने का मौका मिलेगा। हर कंपनी, हर आईआईटी से अलग रूल है, तो 50 कंपनी में आप मैक्सिमम बैठ सकते हैं। तो मैं भी बैठा। तो पहले दिन मैंने एग्जाम था दिया, वो था मेरा अमागी का, ठीक। मैं था फुल कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। अमागी का एग्जाम शुरू हुआ, मेरा कंपाइलर ही नहीं चला, ठीक। एग्जाम गया तेल लेने, ठीक। एग्जाम खत्म, पहले ही दिन डिमोटिवेट, सब बच्चे खुश कि हमारा अच्छा हो गया। अब मैं अलग डिमोटिवेट कि यार पहले एग्जाम था उसी में ये क्या कर दिया मैंने। फिर फिर मैंने सोचा चलो आगे एग्जाम में उन पे फोकस करते हैं। फिर एक एक करके शुरू करा, तो 50 एग्जाम दे चुका था, 17 से 18 कंपनी में शॉर्टलिस्ट था, ठीक। अब एक चीज और होती है आईआईटी में कि आप किसी कंपनी में शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुए, इसका रीजन आपके पास होगा ही नहीं। मतलब मैंने बहुत सारी कंपनी से सारी क्वेश्चन करे, तब भी मैं बहुत कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, और उसका रीजन मेरे पास नहीं था। ये रीजन नहीं था कि मेरा फ्लैग आया या फिर मैं कम टाइम में गया, उसका कुछ लॉजिक पता नहीं चलता। तो 50 क्वेश्चन मैंने 50 कंपनी में 17-18 निकाल दिया। अच्छी अच्छी कंपनी थी, उबर थी, मीडिया.नेट थी, सिस्को थी, और पेटीएम, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी थी अच्छी अच्छी कंपनी। अब क्या था कि इंटरव्यू होने वाले थे। अब मैंने इंटरव्यू 30 नवंबर को मैंने अपना इंट्रो तैयार किया। जो इंटरव्यू मुझे असली में बोलना है वो मैंने 30 नवंबर को करा था यार। और आपको हमेशा लगता है कि आप फुली प्रिपेयर नहीं हो, और वो मेरे साथ भी था। मैं सोचता था एक वीक और मिल जाता, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लेता इंटरव्यू के लिए। रात 12 बजे से, मतलब रात 1 बजे से 1 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था उबर का। पहला इंटरव्यू था मेरी लाइफ का आज तक का। मैंने आज तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था किसी भी कंपनी का। मैं इंटरव्यू देने गया, तो पहले 5 मिनट जब इंटरव्यू मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करा था, कोडिंग राउंड था पूरा, वो इंटरव्यू आगे से क्वेश्चन बोलेगा, मुझे यहाँ पे कोड लिखना था, उनके आगे स्क्रीन शेयर हो रही थी। पहले 5 मिनट तो मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि बोल क्या रहे हो। और एक थोड़ा डर सा होता है कि एक एंग्जाइटी होती है इंसान को अंदर से कि करूँ तो करूँ क्या। सर मैं थोड़ा काम हुआ, मैंने सर को कहा सर मुझे क्वेश्चन रीड करने दो, उसके बाद मैं कुछ करूंगा। तो मैंने क्वेश्चन रीड किया, आराम से भूल रहा, और मैंने सीधा सीधा मतलब मेरे दिमाग में वही अप्रोच आई, मैंने सीधा ऑप्टिमाइज अप्रोच रखा थी। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन पहले देखा था। दिमाग तो ब्लैंक रहता है जब भी आप कभी एग्जाम देने जाते हो ना, आपका दिमाग हमेशा ब्लैंक सा रहता है। अगर आप पहले जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, जेईई मेंस का दिया होगा पहली बार, दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है, पता नहीं चलता कि उस टाइम पे हो क्या रहा है असली में, मतलब सेंसेस नहीं रहते। सेम मेरे साथ हुआ, मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा था। वो अप्रोच आई, मैंने वो बोली, वो काम कर गई। पहले क्वेश्चन खत्म, कोड लिखा, मस्त खत्म। सेकंड क्वेश्चन बोला, वो भी खत्म। थर्ड बोला, खत्म। 45 मिनट में मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, लग गया था कि हो जाएगा कोडिंग। सेकंड राउंड शुरू हुआ, सिस्टम डिजाइन का राउंड था। सिस्टम डिजाइन लो लेवल सिस्टम डिजाइन का था, वो भी सर ने 6 फंक्शन दिए थे, और मैंने सर को ऑप्टिमाइज अप्रोच बताई थी जो सर करके नहीं लाए थे, तो वो और इम्प्रेस हो गए थे मुझसे। थर्ड राउंड था मेरा एचआर प्लस प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट में भी मेरा ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट है। सर ने काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे मुझे, क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड। सर काफी सेटिस्फाई हुए थे। फिर जो जनरल एचआर के क्वेश्चन होते हैं वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो
इस तरीके से मेरा खत्म हो चुका था। सुबह के बजे थे 5:30, अगर ओवर में नहीं होता तो सुबह 8 बजे फिर से इंटरव्यू अटेंड करता किसी और कंपनी के। ऐसा रहता है, मतलब हर 6 घंटे के स्लॉट में आपको इंटरव्यू देते रहना है। और आप अभी तक सोए नहीं हो। 30 को तो वैसे सो नहीं सकते थे डर के कि कल इंटरव्यू है, और रात भर आप उठे हो। अगर नहीं होता तो मुझे अगले वाले उसमें बैठना पड़ता स्लॉट में। तो मैं घबरा तो बहुत रखा था, होगा कि नहीं होगा। 5:30 AM हो रहा था टाइम, और मैं लेट आ गया था मम्मी के बगल में ही। मैंने कहा मम्मी होगा कि नहीं होगा मुझे भी नहीं पता अभी तो। मम्मी कह रही थी हो जाएगा, मम्मी पूजा पाठ करने लगी थी ऐसी कि हो जाएगा हो जाएगा। तो 6 बजे मैसेज आया कि आपका हो चुका है ऊबर में, पर उस समय ये क्लियर नहीं था कि आपका इंटरनेशनल ऑफर है इंडियन ऑफर है, 2 ऑफर लेके आए थे। मैं तो खुश हो चुका, चलो ऊबर से ऑफर मिला, छुट्टी खत्म, ये इंटरव्यू जो 1-1.5 साल की जो मेहनत थी वो काम आ गई। फिर 8 बजे मैसेज आया कि आपको इंटरनेशनल ऑफर मिला है। एक ही ऑफर था उनके पास, और मैं तो मतलब 7 बजे सामने था, और इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। मम्मी उस टाइम पे गाय को घास दे रही थी। मैं अभी आपको बता चुका था कि मैं थोड़ा गांव के इलाके से हूं, तो मम्मी गाय को घास दे रही है। मम्मी मम्मी तो खुशी हो गई थी नेक्स्ट लेवल। मम्मी कह रही थी अब ये काम मैंने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, अब मुझे करनी है मजे। तो यहाँ तक की मेरी लाइफ की पूरी जर्नी थी। उसके बाद अभी मैंने यही चीजें मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जर्नी से सीखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाए। अगर आप यहाँ से ब्लैंक होकर सीख के जा रहे हो तो फिर यहाँ आने का मेरा कोई मोटिव ही नहीं है। आप किसी को भी फॉलो करते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कुछ भी है, ठीक, फॉलो करो, अच्छी बात है। ब्लाइंडली फॉलो करो वो गलत है, किसी को भी, मुझे भी या किसी को भी। एक चीज याद रखना लाइफ में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कोई भी लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, अपना दिमाग सबसे पहले यूज करना। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाना, किसी और से इन्फ्लुएंस बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, एक बार बैठो आराम से, 1 हफ्ता लो, 2 हफ्ता लो, अपनी स्ट्रेटेजी बना दो, ठीक, कि मुझे ये चीजें करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, ये रिसोर्सेज मैं यूज करूंगा, और इनके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं इसके अलावा कुछ यूज ही नहीं करूंगा। नहीं हुआ फ्लेक्सिबल, मैं नहीं करूंगा। मेरा दोस्त कुछ भी करे, या फिर कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर मुझे कहे कि ये करो तभी होगा, बिल्कुल नहीं। एक बार आपने स्ट्रेटेजी बना दी, उस पर स्टिक करना सबसे इंपॉर्टेंट है, टास्क है वो, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सबको पता होगा कि कंसिस्टेंट रहना कितना बड़ा की है, वही है कंसिस्टेंसी। अपने स्टडी के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि ये मेरे काम करेगा। आज तक लोगों को लगता नहीं था कि गेट से कुछ होने वाला बड़ा, मुझे था कि होगा कुछ ना कुछ। इसलिए आप अपना पाथ चुन सकते हो। क्या पता आपका कोई स्टार्टअप का प्लान हो, मैं नहीं कह रहा आपको पढ़ाई में आना है, आपका स्टार्टअप हो, आपको अपने कॉलेज से बहुत बड़ा प्लेसमेंट निकालना हो, बस अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, उसमें स्टिक करो, किसी से डिस्ट्रैक्ट मत हो। भले ही वो कितना कूल साउंड करे कि यार ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे आपकी लाइफ बन जाएगी। आप जब आप बाहर से चीजों को देखते हो ना तो अलग दिखती है, जब आप अंदर घुसते हो ना वो चीजें कुछ अलग ही होती है। तो ये चीजें मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। अब आपके कोई भी डाउट है आज के सेशन से तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मैं सारे डाउट क्लियर करूँ। तो ये तो मेरी जर्नी थी। तो अब आप कुछ भी क्वेश्चन, कोडिंग, गेट, किसी चीज से भी रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर दूंगा अभी आपको। या तो चैट चैट बॉक्स में टाइप कर लो आप, क्योंकि मुझे साउंड आ नहीं रहा आप लोगों का। सर एनी मोटिवेशनल कोट दैट देखो एक था मेरे लाइफ में, आपको मतलब उतना क्या था ना लगे, मैं कोरा पे भी बहुत एक्टिव रहता था। अब मैं लिखता रहता था, मैंने जो मेरे हार्ट में रहता मैं लिख देता था कोरा पे। तो एक कोट था वो मेरे दिल के काफी करीब था, डू इट फॉर द पीपल हु वांट्स टू सी यू फेल। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, मतलब आपके रिलेटिव भी होंगे कि देखिए कुछ ना करे जिंदगी में, ऐसी है ये निकम्मा है, ठीक, उनके लिए कर लो। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? लिटिल बिट, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत करता हूँ। इफ यू हैड द चांस वुड यू हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली? हाँ, मैं करना चाहता। अगर अगर अब मैं अगर बीटेक वाला जो रोहित था उसको मैं कहता कि यार भाई प्रोजेक्ट पे थोड़े काम कर, थोड़ा कुछ तो कर, कुछ तो प्रोजेक्ट बना जिससे कुछ सोसाइटी को कुछ तो बेनिफिट मिले, ठीक, कुछ तो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर, ये मैं खुद को कहना चाहूंगा। हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन यू फील दैट यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन? हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू फील दैट यू हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन? मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ? देख, रॉन्ग डिसीजन तो लाइफ में बहुत होते हैं, ये नहीं कहूंगा कि आप हमेशा स्टडी जाना वो काम ही करें, ठीक। उसके लिए मैं अभी तो मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। ये सोचूंगा कि हाँ उसको उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा,
फील तो बुरा ही हुआ कि जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती हैं सबको बुरा लगता है। अगर मुझे ये डिजायर रिजल्ट चाहिए नहीं आता तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक, आप कोड लिख रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है तो मन से ऐसा लगता है कि गालियां देने का मन करता है, क्यों नहीं कर रहा है। कई बार तो ऐसा शक हो जाता है कि क्वेश्चन ही गलत है। ये सबके साथ होता होगा। सर हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग स्ट्रगलिंग डेज। देखो मोटिवेट होने का तरीका यही है, आदमी दो ही चीजों से करता है। या तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर लो, पेरेंट्स को देखो कि यार उनकी कंडीशन मुझे चेंज करनी है, ठीक, सोसाइटी है उनके मुंह में एक तमाचा मारना है, ये तो नेगेटिव मोटिवेशन होगी कि हाँ प्रूव करना है मुझे लोगों को गलत की। आपको सब अंडर एस्टिमेट हमेशा मानते हैं, करते रहते हैं, उन लोगों को मुझे गलत प्रूव करना है। इस तरीके से आप उसको मोटिवेट, या फिर अपना कोई रीजन ढूंढो, आपके पास ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ठीक, मेरा रीजन एक तो था मुझे पैसा, पैसा सबका रीजन होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में एक कल्चर है कि लोग पैसे को डेविल समझते हैं कि बुरा है, नहीं पैसा बुरा नहीं है। यही डिफरेंस है कि इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में ये डिफरेंस है। हमारी जो सोसाइटी है ये एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है, हम स्टेटस पे काम करते हैं। लेकिन जो वेस्ट का कल्चर है वो है वेल्थ, लोग सिर्फ वेल्थ के ऊपर एक दूसरे से बातें करते हैं, जो कि एक सही चीज भी है। हर चीज स्टेटस पे मत जज करो, बस यही कहूंगा आपको, ठीक है। हाउ टू डील विद फ्रस्ट्रेशन और व्हेन लाइफ इज समवट अगेंस्ट यू। ये एक सबसे टफ है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो क्या करें। आपके पास ना आपके फ्रेंड्स भी होने चाहिए, मतलब जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं ना, आप अगर आप कोडिंग के तरफ तो आपके 3-4 दोस्त होने चाहिए। मैं हमेशा ये वाली लाइन रिपीट करता हूँ कि आपके उस फील्ड से रिलेटेड फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे आप बात कर सको। अपनी थोड़ी दिल की भड़ास रहती है ना, होती है, मतलब सबके अंदर होता है कि हाँ गुस्सा आता है कि जब अपने अकॉर्डिंग चीज होगी, उनके साथ शेयर कर सको, वो आपको कुछ पॉजिटिव इनपुट देंगे। अभी ये नहीं कि मेरी लाइफ पूरी सेटल हो गई, अभी भी मेरे को बहुत स्ट्रगल देखना है, अभी तो सिर्फ इनिशियल फेज है। तो फ्रेंड्स उस टाइप के बनाओ, अच्छे फ्रेंड बनाओ 3-4। मैं वही कह रहा था, मैंने सबसे पहले लाइन वही कही थी, जो आपके अगल बगल के दोस्त होंगे ना उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत होगा। बिगड़े दोस्त होंगे तो आप बिगड़ ही जाओगे। तो जब भी जर्नी शुरू करो ना, अगर आप कोडिंग वाली जर्नी करो, 3-4 दोस्त बना दो जो कोडिंग करते हो, वो आपको उस दिन पे भी मदद करेंगे जब आपको कोड लिखने का मन ना करेगा कि आपको यार आज रहने देता हूँ। लेकिन आप जब अपने दोस्तों को लिखोगे, अरे वो लिख रहा है चलो मैं भी लिख लेता हूँ, तो इस तरीके से आपको इन फ्रस्ट्रेशन या इन चीजों से डील कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? एक चीज और कि खुद को ना कभी किसी से कम मत समझना, कभी भी लाइफ में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मत आना। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को बहुत कुछ आता है, आता सबको मेरे दोस्त ने मुझे बहुत बड़ी बात कही थी, आता किसी को कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है मुझे बहुत कुछ आता है तो वो इंसान बहुत गलत है। कभी भी इंफीरियर फील मत करना, कभी लाइफ में अगर आप कर भी रहे हैं तो खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए, नहीं मैं सुपीरियर हूं, हमेशा वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी हैं लोगों के लिए, आप सबके लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। क्वेश्चन खत्म हो गया? हाउ टू डील विद फ्रस्ट्रेशन एंड, ये तो हो गया सर, योर फ्रस्ट्रेशन। So I think we are done with the questions. हाँ हाँ बोलो बोलो। So I think we are done with the questions. So okay, you are done with question. Okay. Yes, okay. Sir. Thank you so much. We can wrap up this session, I think. Exactly, sir. Thank you so much, sir, for your gracious presence. I'm okay, sure okay. all of us have learned. I really something enjoyed the session. Yes, sir. तो मेरी तरफ से आप सबको गुड लक। कोई भी किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम कहीं भी कनेक्ट कर लेना। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी आप जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हो अगर आपको इन चीजों से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए। तो बाकी एक कोड मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा याद रखना, ठीक, हिंदी वाला कोड है,
जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. Good luck. Bye bye. Thank you, sir. So, guys, it's time for the most awaited Marvel competition. It's the finale of Marvelous Madness. Yes, I assure you, the finale is going to be as thrilling as its name. It's going live now. So, stay tuned and enjoy the madness.
Hello everyone. Congratulations to Priyanka and Raman for making it to the second round. So this is the final round, and I'll just give you a brief of the rules and guidelines, which you would have already read in the message that we sent. So we're going to give you an unpopular opinion that's there in the Marvel Cinematic Universe, and one of you has to speak against that statement, okay? And we'll give you 10 minutes to think about the topic and note down the points. And after that, you will have 3 minutes to speak. 3 minutes is the maximum time. After that, we'll be deducting your marks and a short cross question if anyone feels like. Are the rules clear? Man, can you Priyanka repeat and that Naman, once network was not clear? Yeah, they are. Okay, so basically, we'll give you an unpopular opinion from MCU, and one of you has to defend it, and one of you has to speak against it. We'll give you 10 minutes to do your research and note down the points. And after that, you'll be given a maximum time of 3 minutes to speak. Okay? Okay. Is it clear now? Yes, it's clear. Okay. Can we use a notebook? Popular opinion that you do have to debate on is Infinity War. Yeah, definitely. I'll just put your topic in the chat box once, and then your 10 minutes will start. What is the topic? She's putting it in the chat box. You can check it there. I guess it's visible now. We'll start your discussion at 10:50, okay? So we have to speak against it, right? Against the topic. Okay, so Naman and Priyank, like, are you guys on a consensus who wants to speak
against or in favor? I think I'll go for against the topic. Priyank, is that okay with you? Yeah, it's I'll completely okay. I'll go in the favor of the statement. I'm sorry, I didn't get you. Naman, you're going to speak against, right? I want to speak in the favor of the statement that Okay. Infinity War is better than. Priyank, can you speak against the topic? Yeah, I can speak against the topic. Okay. Cool. We'll start at 10:50.
Okay, so the 10 minutes are up. Priyank, you have to go first. Okay, I'll start timing you. Yeah. So I have gathered some points that why Endgame is better than why Infinity War is not better than Endgame. So let's see. First, we come to the tomato meter. Okay, it is a rating system of movies. Okay, so as we can see that Endgame got 94% tomatoes. Okay, and Infinity War got only 85%. Which is why we can say that Endgame was better than Infinity War. Okay, and let's come to the scenes now. Okay, the most popular scene that was Avengers Assemble, okay, in which all the Marvel characters, including the Guardians of the Galaxy, Avengers, Ant-Man and the Wasp, and a lot of other characters like Avengers, okay, and even the Howard the Duck, which is the oldest character, which is a very old character of Marvel, Howard the Duck, which is also there in the scene. Okay, so we can't deny that it is the greatest scene of Marvel history. Okay, then come to the humoristic scene. I can never imagine that Marvel could did this that they make Steve Rogers say "Hail Hydra," which is a very humoristic scene. I was laughing hard. Okay, and then we come to the lovely scenes that Tony meeting Howard Stark, his father, and Steve meeting Peggy Carter. Okay, Peggy Carter, also known as that Margaret Carter. Okay, and the monologue of Tony Stark, that is the part of the journey is the end, which is beautifully written and was beautifully directed by Anthony and Joe Russos. That's all I want to say. Like that's why I think that Endgame is better than Infinity War. Yes. Okay, so Dipanshu and Harsh, do you guys have any questions? After that, Naman, you can also ask. Okay, so Priyank, Dipanshu here. So he's saying Endgame is better than Infinity War. Don't you think that the themes is a little dark for the MCU? MCU is like a more humor part, more like a light part. It's from the Disney, of course. But don't you think it's in a bit dark phase, like trillions gone, people are not there. So how can you say that it's better than Infinity? And how it justifies the MCU's character justification for every character? Actually, can you just repeat the question? Your voice was not clear. Actually, thank you. So I was saying that it's a bit dark theme for Yeah, MCU, it's right? a bit, yeah. I mean, trillions gone, half the population is Yeah, gone. yeah, Gone. yeah, yeah. So do you think it justifies the MCU's career? I mean, it's like from Disney, of course. Okay, Disney is a light thing. Yeah. Okay, Paul. So how it justifies the whole criteria? Yeah. So see, we can see the art of the direction. Okay, like obviously it will be a dark theme because half of the universe is disappeared, or we can say it got blipped. Okay, so it is really necessary to show the dark theme of the Marvel, because if we show the light theme, then it will not that much relevant to the topic that the half of the universe got blipped. Okay, so it is really necessary to show the darkness. That's why it is a part of direction. That's why. And after that, they also show the light theme that when they got past in the time where in the New York attack, okay, or in the 90s where Tony met Howard and Steve met Peggy. So I don't think that is a dark scene. The part of a movie was dark, but a part of the movie was also light. Yes. Priyank, don't you think that Endgame got so much popularity just because of death of Iron Man? You're not audible yet. Your voice was glitching a bit. Can you just can you type a question in the chat box here? Sure. Also, till then, I wanted to ask you, Priyank, Yeah.
I mean, don't you think that Endgame is a little fast paced? Infinity just showed me how Thanos collected all the Infinity Stones, how it was, I mean, building up, how in the previous film showed that he was doing stuff. He sent Loki, Ultron was there, right? It showed so many characters, but still, uh, Endgame was a little fast. I mean, they just went back in time. How do you justify this? I mean, I can justify this by saying that if they land up things, then it is really very difficult for the fans to digest. Okay, like if they show everything, then it is really like they have to make I mean, everything. as a fan, I mean, I can digest. ठीक है मुझे अगर तीन चार parts मिल जाए I'm okay with that. Yeah, But but you lost patience. You lose I patience mean, after. it builds some. Some mysterious things. Some like a good thing. It builds up. Yeah, but you see that they think that their point of view that they think that they lose a number of fans because of the loss of patience. Okay, like if they are continuously adding up things again and again and again and again, so it will make things boring. That now the thunder is not dying only, and again and again this happening again and again and again the diet characters are coming like Ultron and other characters also. So it will be a bit boring according to me also as a die-hard fan of Marvel. Don't you think TikTok? Priyanka, I have written the Yeah, yeah, question. yeah, yeah. No, I don't think that Endgame got popular because of the sacrifice of Iron Man. See, Endgame shows really so many things that we didn't see. Okay, first is obviously the sacrifice of Black Widow and Iron Man, which we can't deny make it popular. But also things which really show about is love. Okay, the love for Steve and Peggy, the love for Pepper and Tony, while Tony was dying, and when Pepper said to Tony that you can rest now, which was really emotional, which really make the movie so nice and so amazing that we were just so emotional and we just cried in the theaters. Okay, most many fans cried in the theaters. Okay, so this makes really the movie amazing. Okay, and there were really some hooting like audience were hooting in their scene. There were so many scenes like when Steve met Peggy, the hooting was done. When Tony met Howard, the hooting was done. In the Avengers Endgame, obviously, when Iron Man said I am Iron Man in the end, then also the fans went mad. Okay, so there was so many mad scenes. Okay, and if we compare it to Infinity War, then there was not that much mad scenes, like only the one that Thor entered. Okay, that was a mad scene, but apart from that I didn't find any mad scenes in Infinity War apart from Thanos entrance and anything else. That's it. That's why I think Endgame is better. So there was too much madness. Okay, I think that is it for the cross questioning. Naman, you can start your part. Good morning, everyone. So I want to speak in the favor that Infinity War is better than Endgame because Infinity War is not basically based on the people say that there is a Marvel formula in the whole MCU. Uh, there, there were not a basic Marvel movie that everyone knows the hero's team will win in the end. It was uncertain who will win in the end. So the directors, Russo brothers, we saw they humanized Thanos. They not only make him a overpowered villain or some cliche villain, they showed that he also has a right idea of doing the thing, but he has the wrong way of doing them. So War was based on that, and we saw some fun team ups like two egoistics of MCU, Tony Stark and Doctor Strange team up, and post Thor Ragnarok team up like Thor and Guardians of the Galaxy. So there were some fun team ups, and they showed that they showed the impact of the civil Captain America Civil War that heroes went together. So there were three teams divided. So they fought Thanos on three different occasions. And
sometimes they seem to overpower Thanos, but at the end he overpowered them all, so he wins. And there was an airtight story connecting all 18 films before the Infinity War. So there were minimal loopholes in the story. So it was a perfect, near to perfect story. In Avengers Endgame, I'll say that we all knew that in Endgame there will be a certain solution that heroes will win at the end. Absolutely. So in the Infinity War, they were not certain that will the heroes win or Thanos win. So it has very downer ending that he snapped half the population of the universe and watching the sunset in his garden, as they state. And it also show the emotion between Thanos and her daughter Gamora. So she have and that he believes that his cause is so great that he has to sacrifice his own daughter to uh, to save the universe, in his words. But they think the Avengers think he's wrong, and they try to defeat him. So that's my argument in favor of this. Thank you. Naman, I would like to cross question you that don't you think that Infinity War was just about Thanos? Like Infinity War, we saw that only power of Thanos. Like we saw, even whenever heroes were doing best, they were getting defeated just because the directors were to produce Endgame. Don't you think that Infinity War was manipulated in that way only that Endgame could be produced? So Endgame should be better. No, they didn't only show the powers of Thanos. I agree that most of the parts show the powers of Thanos, but when the Thanos arrived at a Titan, when they Doctor Strange, Iron Man, and Guardians team up, he also tells them the story about how his planet Titan was at the brink of extinction. So he was going to erase half the population so that resources were there to fulfill. But if directors didn't do that for just for the sake of directing Endgame, they wanted to show the villain they are using from the last 18 movies. The Thanos was first introduced in the first Avengers movie in the post credit scene. So they had to show him to so to uh, pay some respect to the old 18 movies, and they had to show care. So it was uncertain that whether he'll win or not. So at the time, there was not certain that there will be Avengers Endgame or just Infinity War. And Naman, so I was asking ki, I mean, in the comics, Thanos is like more a cruel person. He's not a person जो population कम करके resources को fulfill करना चाहता है. He's not like that person. He's like a dominator ठीक है, of worlds. Okay, not like characters, but he is still a very powerful character. In Infinity War, he was shown like a person who is very good. I mean, he should have done the. I mean, he was doing this for the universe, right? But in the end game, it showed how cruel he was. He just wanted to kill everyone. He understood that he cannot, I mean, help anyone. He was just going to kill everyone and make a new world, right? You remember that? So don't you think Endgame did a better justification of the character in that sense, in the comic sense? In the comics, we see that when Thanos was born, his mother got so mad by seeing him that she tried to kill him, but Thanos' father stopped her from killing her, as you know. So he tried. Then, after growing up, he killed his own mother. So, in which this show, Infinity War, show this in the smaller way that we remember the scene where he abducted Gamora from her planet when he was telling her to perfectly balance that blade, that perfectly balanced as all things should be. In background, we saw that he genocide a lot of people on her planet. And for the sake of some stones, for the sake of soul stone, she sacrificed her own daughter. So this also shows us that he's a cruel in the real sense. So that's that.
And we also see that he's captured the Nebula and trying to help her captured by pulling her parts apart to try to break her. So that's that. Can I ask questions? Actually, because of the time constraint, Naman also didn't get to cross question you. So I think we would just end the round over here. That is it. Thank you for joining, guys. Stay tuned on our social media and you'll get to know the results there only. Thank you. Thank you. Have a so good much. day.
Hi, Ashish. We know about your timing constraint. It's just that the other person who's supposed to participate with you hasn't joined yet. We've given them a call. We'll just wait for 1 or 2 more minutes. Asmita, can you please call them again and check? Yeah, I called him. He's saying he's joining in a minute. Okay. Okay, I think Shashank will take some time in joining. Meanwhile, we can start with Ashish. So, Ashish, I'll just explain you the rules and guidelines. So, you'll be given an unpopular opinion, and you have to choose whether you want to speak against that statement or in favor of that statement. Okay, and you'll be given 10 minutes. Now, since you have less time, obviously you can like take less time and prepare, and you can start speaking. We'll give you a maximum time of 3 minutes to speak, and then we'll have a very short cross questioning round. I hope you're clear with the rules. Also, Ashish, I think you'll have to accept your request. I think Ashish left. So what we can do is we can have the next team right now, and we'll change their time slot. All right, let me call them.
Asmita, just give them a call once. One participant has already joined and the other one is joining in a minute. Asmita, sorry, what were you saying? One participant has already joined and the other one is joining in a second. Okay, great. Hello everyone. Hi Shaurya, hi Bhublan. I hope I'm pronouncing your name correctly. First of all, congratulations on making it to the second round. So, Asmita, can you please explain the rules and guidelines to them? Yeah, sure. First of all, congratulations to both of you. And yeah, so the instructions are simple. We will be giving you an unpopular opinion and you will have 10 minutes to do all of your research. And yes, you can use Google and your notebook. And then you will have 3 minutes individually to speak up your points, which will be followed by a cross-questioning round. It can be done both by the judges and you against yourself. So yeah, are you clear about it? You can speak up if you're the panelist. Okay, so first of all, can you guys please switch on your videos? Bhublan and Shaurya. I can't see Shaurya over here. Has Shaurya joined? Even I can't see him.
Just a second, Shaurya. We're making you the panelist, so then you can switch on your video. Shaurya, can you please switch on your video? And do you understand the rules and guidelines that are explained? Yes, I understood. Okay, so the unpopular opinion that you guys have to debate. Just a second, I'll tell you. Yeah, so your statement is Captain America should have died instead of Iron Man. So, which one of you is going to speak against the statement and who's going to speak in favor of the statement? I will speak against the statement. Okay, Bublan, is that okay with you? Can you speak in favor of the statement? Is it just me or can no one hear Bublan? Bublan, if you can't speak, you can just type it in the chat box. No, but they'll have to speak eventually. Yeah, Can you try unplugging your earphones? So can I start my research? Yeah, I think you can start your research and meanwhile we'll see if Bublan joins. Otherwise, we'll have someone else debate with you. Okay? Okay, so yeah, your 10 minutes start right now. Shaurya, you're speaking against the statement, right? Yes. Okay. Bublan, just a second. We're making you the panelist. I'll tell you the topic meanwhile. So, you have to speak in favor of the statement Captain America should have died instead of Iron Man. And you've been given 10 minutes to research, and then Shaurya is going to speak, and then you're going to speak.
Bhuvan, can you please? Okay, yeah, that's good. Shaurya, you can start speaking. We'll start timing you, and you have maximum of 3 minutes to speak. Should I start? Yes, you can Yes, start. please.
Okay, so good morning. Today I will speak in favor in against the statement that that Captain America should have died in place of Iron Man, because both the ending for Captain America and Iron Man was perfect, and it was according to the character arc that both of the characters had. Iron Man started as a very selfish character, whereas Captain America started as very selfless character who was ready to give everything away to save others, whereas Iron Man was opposite when he started his journey. And in the end of their journey, both of them, Captain America learned that sometimes you need to live for yourself and have a family, and sometimes you have earned the right to live a little. After he saw that Iron Man uh, get the chance to have a family, and Iron Man learned that he need to sacrifice himself to save everyone else. And also the and uh, it was also fitting that the that Captain America was always known as the man out of time, and so it was very fitting that in the end of his arc he returned to the place where he started. And the end of the first movie ended with the prom of the dance, and in the end of his arc he got the chance to dance with Peggy Carter. So it was very sweet and happy ending. So at least one character needed an happy ending. Also, Iron Man was one of the first character who understood the threat of Thanos when he had the vision, and it was fitting that he got the chance to defeat Thanos in the end, because Thanos was like his biggest nightmare, and and even Thanos also recognized him in the Infinity War battle. So it was fitting that he got the chance to defeat them. Also, the I am Iron Man line that he said in the end was also like nice ending for him, because the first movie also ended with the line of I am Iron Man. So both of the characters' story ended in a similar way, like their story started in the end of their first movie, like the promise and the Shaurya, yes. that's fine. Your time has ended, unfortunately. Okay. Thank you. Bhublin, you can go now. Are you ready? Bhublin? Okay, so Dipanshu, Harsh, Divyan, who would like to cross question? Uh, I want to ask Charlotte that don't you think that Iron Man has a family, but Captain America was not having at that time? And if Iron Man could have not died, we could have seen a better family of Iron Man. And if we see that of Captain America, in the end we saw that Captain America got old and he was then going back to family. Like now Captain America don't have any role in Marvel. So basically they are ending two roles. But if they would have ended of Captain America, then they would get one. They would end only one role. Don't you think? No, I don't think so, because with the time travel problem is now not such a big problem with the multiverse and all that stuff. They can easily explain all the stuff that happened with him returning, and with Iron Man, he had his time to have a family, but at the end he also knew that he cannot rest, and even when he gets a family he still wants to fight, and he still wants to fight for justice, and he cannot rest. And that's why in the end he said that Pepper said to him that you can rest now, because she also knew that he would never have rested peacefully and kept on fighting even if he had a family. Sorry, don't you think that this time travel constraint will make
the MCU some unrealistic. Like if Iron Man couldn't have died, then this time travel need not to be performed. And now it seems like unrealistic, like they can do anything just because for making Iron Man die, they are making that MCU unrealistic. Uh, if they use the time travel properly, then it will not be a problem. They can establish rules and other stuff and use like punishment and like with Loki, or we have seen in multiverse like punishment for breaking the rules or something like that, so that it will not become like repetitive in itself. And when it happens, it will be like special. Like Endgame was a special occasion. It was like ending of a 22 movie arc, so it was very fitting to like use it, such a big concept in that movie. Okay, so Bhuvan, you can start speaking now. Hello, am I audible to you? Yes, you are. First of all, the reason why Captain America should have died is Tony has a family. He has a small child and his wife. Even the Captain America not have a family. Then Tony has guided Peter Parker. After Tony is dead, Peter Parker is very he could not travel in a straight path. He goes with several mistakes and there is no big guidance from Tony Stark. Peter Parker is struggling to go into the life. Even though after the No Way Home also, Peter Parker is in a tough situation. If Tony Stark is there, I think this may would not be happened. Mm. Also, Captain America should have died because he's the leader. He only had guided the team and rebuilt the team. He only asked Tony to come. Uh, uh, Tony, he should have kept belief in all of them. So he should move forward and do the Infinity Stones to kill Thanos. But he was not in. Also, he was in a military. Whether he was in a military, we have seen in that Captain America, the first Avenger movie, he would have. They will keep a test with him whether he will be suitable for the super soldier or not. He would have took that bomb and there was he would have helped us good. But in Avengers Endgame, he would have not done anything. Then Iron Man have started the MCU series with 2008 Iron Man have started the MCU series. There was a huge fan base for Iron Man. Even though after the event game, Captain America has also had no scope with him. Whether if he had if Captain America is dead and Iron Man is in, MCU have moved it in a very good way. Bringing him in is the Spider-Man series and others. Even though after the Iron Man death, the MCU is very struggling, very down. After the Black Widow movie, Shang-Chi, uh, series has been several disaster for the Marvel fans after seeing them. If Tony Stark would have been alive, the thing will be totally different, and the MCU series will be totally interesting. Even though Captain America is not dead, his character is almost
So guys, I have finished it. So Bhuvan, you said कि Iron Man could have helped Spider-Man when I mean you were saying that okay fast forward. But don't you think that Spider-Man also should have had a growth story? I mean, he would be just dependent on Iron Man for the rest of his life. Also, Iron Man should have ended with a phase 4. He started the phase 1 first. So it was a Voice better is ending. breaking. Yes, now it is better. Yes. Now I am able to hear you. Yes. So I was saying that Spider-Man should have had a growth story of his own. I mean, he would have been dependent on Iron Man for the rest of the series. I mean, they wouldn't have been, but they wouldn't have multiverse expanding. I mean, the MCU had to focus on other stuff like vision. And how can you justify that Captain America should not have died? Because, I mean, he lived a life, he has done everything. So can you say it in a short and sweet? It was little bit breaking during your question. Hi, Bhuvan. Since Dipanshu is not audible to you, so I am repeating his question. Okay. Dipanshu means that like Iron Man was in the end of his phase. Like if he would working as Iron Man, like he was going to his family only. Like he said